Hello guys, so next question है conditional statements. Okay, so here we have to use the switch case. Okay, so here what is the question? So the basically they are passing a string, and if the first character in a string is in the set, okay, so then we have to return A, B, C, D. Okay, so we have to write the switch case, उसके हिसाब से हमें रिटर्न करना पड़ेगा. ओके, सो व्हाट दे हैव गिवन हियर, from function they are passing a string to this function get letter. Okay, so here they have created one variable letter and returning that letter. Okay, so without this variable we will do the function. Okay, so for finding the first character in the string, okay, so for that, yes, dot char add, this is the function that will get us the character at first position. Okay, so what we will do, we will pass this character to the switch function. Okay, in the switch function, and we will write the conditions. Okay, so the first condition, first case is it, we have to check the character with this set. Okay, so for that case, okay, case, so I will write all the things A, E. ओके, अभी इसमें बहुत टाइम जाएगा यार. A, E, I, O, इसके बाद फिर से A, E, I, O, U. ओके, सो इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू मीन्स कौन सा भी कैरेक्टर आएगा तो इस वाले केस में जाएगा. मीन्स अगर A रहा तो A इस केस में जाएगा, अगर U रहा तो इस केस में ही जाएगा. तो अगर इस केस में आए तो हमें क्या कर देना है, रिटर्न व्हाट विच कैरेक्टर वी हैव टू रिटर्न, we have to return A. Okay, so we are directly returning A. so इसके बाद ब्रेक वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपने वो वेरिएबल लिया रास्ता तो हमें ब्रेक वगैरह कंडीशन लिखने पड़े असते. तो सिमिलरली we will write all these things. Okay, so similarly we have written all the cases. Okay, so this one for second set, this one for third set, and this D for last set. Okay, so we will run the code and it will run. Okay, उसमें क्या है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. कुकुडुकू. Okay, so thank you guys.